जय जगन्नाथ फ्रेंड्स स्वागत करुछि आम चैनल तरफ मु सुब्रत एक न्यू वीडियो सहित फ्रेंड देखंतु आज हम डिस्कशन करिबा जे ओ ट्रिपल एस रो पीओ रो माने कंप्यूटर क्लास सब डिस्कशन करथिले तो क्वेश्चन सब माने डिस्कशन करथिले तो आपण मानकर बहुत सारा पिला मानकर क्वेरी आसुतला बहुत सारा पिला माने कॉल एवं मेसेज करथिले कि सर हम पई कंप्यूटर के जेटा थ्योरी क्लास नै आसंतु तो देखंतु आज आपण मानन पई कंप्यूटर मेमोरी रो एटा आपण थ्योरी क्लास को डिस्कशन करिबा देन नेक्स्ट पार्ट रे माने तार क्वेश्चन सब डिस्कशन करिबा देखंतु ऑलरेडी माने कंप्यूटर फंडामेंटल ऊपर 17 टी क्वेश्चन डिस्कशन करि सारछंती पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जदि आपण माने देखि नांती जो जाय करी देखि नियंतु तो देखंतु एटा आपण कंप्यूटर मेमोरी रो थ्योरी क्लास टू डिस्कशन करिबा प्रथमे आपण को इंट्रोडक्शन रे देखंतु द कंप्यूटर्स मेमोरी स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा आउटपुट रिजल्ट स्टोरेज में बी रिक्वायर्ड फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इंस्टेंटली और अन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम देखंतु जो कंप्यूटर मेमोरी टी डाटा को स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन जो रिक्वायर करता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड तासे आउटपुट रिजल्ट मध्ये देता है स्टोरेज आपनकर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम हेता है इंस्टेंटली हेता है बा आपनकर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पे हेता है देखंतु डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी रही देखंतु एटा आपनकर डिफरेंट टाइप रे मेमोरी रही जेपरि कि ईच हैविंग इट्स ओन यूनिक फीचर आर अवेलेबल फॉर यूज इन ए कंप्यूटर the cache memory the register and the ram are the fastest memory and store the data and instruction temporarily but during the process of data and instruction देखंतु एटा आपनकर जो कैश मेमोरी और रजिस्टर और आपनकर रैम होची आपनकर फास्ट मेमोरी एंड स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन टेम्पररीली स्टोर करिथा है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी मेमोरी देखंतु जोटा कि आपनकर मैग्नेटिक डिस्क हैला ऑप्टिकल डिस्क हैला लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी रहिची एंड स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली एटा आपनकर स्टोर करिथा है बट आर स्लो मेमोरी डिवाइस देखंतु एमाने स्लो अछंती किंतु आपनकर डाटा जो स्टोर करिथांती बहुत टाइम पर्यंत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर्यंत माने स्टोर करिथांती तो बुझिले एटा आपन दुई टाइप रे आपनकर जो आपनकर मेमोरी रहिची गोटे आपनकर फास्टेस्ट आपन मानकर जो फास्टेस्ट मेमोरी रहिची आ गोटे स्लो मेमोरी डिवाइस रहिची नेक्स्ट आप देखंतु कंप्यूटर जो आपनकर ए जो मेमोरी रो क्लासिफिकेशन देखंतु प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर रो दुईटी मेमोरी रो क्लासिफिकेशन रहिची गोटे प्राइमरी मेमोरी जोटा कि आपनकर इंटरनल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी जोटा कि आपनकर एक्सटर्नल मेमोरी देखंतु एटा आपनकर जो प्राइमरी मेमोरी जोटा कि इंटरनल मेमोरी दुई टाइप रे गोटे होची आपनकर रैम आ गोटे होची रोम देखंतु रैम रे मध्य तीन टाइप रे रैम दुई टाइप रे रैम को भी विभक्त कराइची गोटे होची एस रैम आ आपनकर डी रैम यार सब फुल फॉर्म आगु को आसीबो आ माने व्यस्त होतनी खल थरे देखि नियंतु रैम होची आपनकर तीन टाइप रे प्रथम जनकर पी रोम सेकंड कोची पी रोम थर्ड कोची ईईपी रोम तो तापर एटा आपनकर जो इंटरनल मेमोरी टी दुई टाइप रे रैम आ रोम रैम आपन को डिवाइड करा गला दुई टाइप रे रोम आपन को तीन टाइप रे डिवाइड करा गला सेकेंडरी मेमोरी जोटा कि एक्सटर्नल मेमोरी एटा आपन को तीन टाइप रे होची आपन को मैग्नेटिक स्टोरेज सेकंड कोची ऑप्टिकल स्टोरेज फ्लैश स्टोरेज देखंतु जोटा कि मैग्नेटिक स्टोरेज टी आपन को एचडीडी फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक टेप देन आपन ऑप्टिकल डिवाइस टी सीडी और आपन डीवीडी आपन सुनिथिबे छोट बळे सीडी आपन गीत सुनिथांती ए सब आपन ऑप्टिकल डिवाइस एंड तो फ्लैश स्टोरेज होची आपन पेन ड्राइव हेला मेमोरी कार्ड हेला सब आपन फ्लैश स्टोरेज तो एबिला आपन मेमोरी टी को डिवाइड कराइछि इंटरनल रे कोडा जाउछि एक्सटर्नल कोडा जाउछि भलो भाबरे थोर देखि नियंतु एंड तापरे तले क्वेश्चन आसीबे आपन माने आर आंसर टी को देई परिबे नेक्स्ट तापर देखंतु एटा आपनकर देखंतु फास्टेस्ट जो स्पीड अछि तो सेही हिसाब रे आपण देखिबे एटा आपनकर कैपेसिटी आपण देखंतु जोडी का जल्दी जल्दी स्पीड रे एटा आपनकर फास्टेस्ट जोडा स्पीड थाए तारो कैपेसिटी होछि आपनकर कम जोडा कि आपनकर देखंतु मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क रे एटा आपनकर बिगर कैपेसिटी बट आपनकर स्पीड टी बहुत कम एट मैग्नेटिक डिस्क रे आपन कैपेसिटी टी अधिक हले आपनकर स्पीड टी कम देखंतु रजिस्टर इन द सीपीयू रे एटा आपनकर फास्टेस्ट स्पीड टी रहिछि बट आपनकर कैपेसिटी बहुत कम एंता से तो कैश जोड की कैश मेमोरी रे से स्पीड अधिक अछि बट आपनकर कैपेसिटी नाही एटा परे आपनकर डिवाइड आपनकर डिस्ट्रीब्यूट करा जायछि तापर देखंतु इंटरनल मेमोरी जोडा प्राइमरी मेमोरी हम डिस्कशन करितले देखंतु की फीचर ऑफ द इंटरनल मेमोरी आर लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी रहिछि टेम्पररी स्टोरेज फास्ट एक्सेस हाई कॉस्ट देखंतु तो आपनकर इंटरनल मेमोरी जोडा प्राइमरी मेमोरी एटा आपनकर लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी रहिछि टेम्पररी स्टोरेज सेटा करता है फास्ट एक्सेस हेता है एंड हाई कॉस्ट हेता है देखंतु एक्सटर्नल मेमोरी जोटा कि आपनकर सेकेंडरी मेमोरी टी देखंतु एमानकर जो की फीचर देखंतु एटा एक्सटर्नल मेमोरी कैपेसिटी रो एमाने वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी रहिथांती परमानेंट स्टोरेज जोटा कि नॉन वोलेटाइल हेतांती अनलेस इरेज बाय यूजर देखंतु एटा आपन जो सेकेंडरी मेमोरी टी तो आपन माने यूज करूथिबे तले आपनकर करंट टी बंद हो जाय किबा स्विच ऑफ हो जाय आपन मानकर जदले पावर टी कट हो जाय तो आपन जहां भी आपन स्टोरेज आपन करिथांती स्टोर करिथांती से माने एठी आपनकर परमानेंट आपनकर स्टोरेज हिता डिलीट होई नथा
ଯେତେ ଯାଏ ଆପଣ ତାକୁ କାଟି ନାହାନ୍ତି ସେ ଯାଏ ଷ୍ଟୋରେଜ ହେଇକି ରହିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ରିଲେଟିଭଲି ସ୍ଲୋର ଆକ୍ସେସ ରହିଥାଏ and store data and instruction that are not currently ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାଟି ସେମାନେ ଷ୍ଟୋର କରିଥାନ୍ତି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କୁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର not currently। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ being used by CPU but may be required for later for processing ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ टेम्पररी स्टोर କରି नथान्ते एमाने बहुत टाइम पर्यंत बा आपनकर लॉन्ग प्रोसेस पर्यंत स्टोर करि थान्ते से कथा कहूची कि एक्सटर्नल मेमोरी रो आपनकर सेकेंडरी मेमोरी रो तार सब आपनकर क्राइटेरिया। तापर देखो तो चीपेस्ट एमंग द ऑल मेमोरी देखो दैट मान पूरा सस्ता पड़ी थान्ती बेसी आपनकर प्राइस न थाए आज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। तापर देखो जो प्राइमरी मेमोरी टी जोटा कि मेन मेमोरी एटा आपनकर प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इट इज ए चिप mounted on the motherboard of computer. Primary memory is categorized into two main type रे गोटे होची RAM मो ऑलरेडी आपन कहइतली रैंडम एक्सेस मेमोरी तार फुल फॉर्म जानि रखंतु RAM रो रैंडम एक्सेस मेमोरी सब बेले क्वेश्चन रे एग्जाम रे पचारि थाए एंड ROM होची आपनकर रीड ओनली मेमोरी। एंड तासे देखंतु यार कैरेक्टरिस्टिक और प्राइमरी मेमोरी कोन होची दे आर सेमीकंडक्टर मेमोरी इट इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी एंड तासे तो यूजुअली volatile memory डाटा इज लॉस्ट इन केस ऑफ द पावर इज स्विच एमाने होची volatile रहितांती से माने जदर पावर टी बंद हो जाता है से मानकर जो डाटा रहिता है से माने लॉस करथांती। इट इज वर्किंग मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर फास्टेस्ट देन द सेकेंडरी मेमोरी माने फास्टेस्ट रहितांती कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी को जदि आपण माने बाद दे देबे तो आपनकर कंप्यूटर टी रन हे परिबो नाही। तो एटा आपण देखि परते एसु आपनकर प्राइमरी मेमोरी रो कैरेक्टरिस्टिक। तापर देखंतु रैम विषय रे ठी RAM रे देखंतु जो वर्ड RAM stands for random access memory और may also refer to short term memory RAM को आपनकर short term memory बोली कहा जाय बा आपनकर random access memory बोली कहा जायता है। It is called random because they can read store data randomly at any time from any physical location देखंतु एमाने randomly डाटा को रीड करथांती तांते स्टोर करथांती randomly हेति पय आपनकर random बोली ना दे जायछि। It is temporal storage memory that आपनकर temporary storage करिथा जो आपनकर डाटा को एंड तासे तो RAM is volatile that only retains all the data as long as the computer powered it is the fastest type of memory देखंतु RAM आपनकर fastest type memory आपन ऑलरेडी जानि चंती एंड तासे तो एटा volatile माने जेतो आपनकर पावर अछि से से स्टोर करथबो डाटा को जदि आपनकर थरे पावर टी डिस्कनेक्ट हे गेला तो तापर से आपनकर डाटा जोटा स्टोर करथबो सेटा लॉस हे थाए हेति पई करेक्ट आंसर जो आपनकर volatile होछि आपनकर RAM टी। RAM store the currently processing data from the CPU and sends them to the graphics unit। तापर देखंतु एटा आपनकर there are generally two broad sub category of the RAM रो category देखंतु आपनकर देखंतु परमानेंट जो आपन पैरामीटर अपन देखंतु तासे तो SRAM और आपनकर DRAM देखंतु SRAM रो फुल फॉर्म कोन स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड एंड रिटेन स्पीड देखंतु फास्टेस्ट रहिछि स्लोअर होछि आपनकर देन SRAM आपनकर SRAM टी एटा आपनकर फास्टर अछि एटा आपनकर DRAM टी SRAM थारु स्लो अछि। स्टोरेज कंपोनेंट कथा देखिबे अनलेस ट्रांजिस्टर to the store single bit of the information use separate capacity to store each। प्राइस देखंतु SRAM रो एक्सपेंसिव देन द DRAM टी आपनकर टिके इकोनॉमिक हेता है SRAM टी आपनकर टिके एक्सपेंसिव हेता है। पावर कंजम्पशन देखिबे आपनकर SRAM टी अधिक पावर टी कंज्यूम करिथा है एंड दस तो DRAM टी कम पावर टी आपनकर कंज्यूम करिथा है। रिफ्रेश रे नो नीड टू रिफ्रेश द जोटा कि मॉनिटरिंग मेंटेनिंग डाटा नीड टू बी रिफ्रेश्ड थाउजेंड ऑफ द टाइम एवरी सेकंड से मान एटा DRAM टी आपनको रिफ्रेश करिया पय पड़िथा बट आपनकर जो आपनकर SRAM टी रिफ्रेश करिबा दरकार नाही। तापर यूज हेता देखंतु आपनकर कैश मेमोरी रे एटा आपनकर मेन मेमोरी रे DRAM टी यूज हेता है देखंतु यूज कथा एटा आपनकर कैश मेमोरी रे यूज हेता है और आपनकर DRAM टी मेन मेमोरी रे यूज हेता है। इंटरनल स्ट्रक्चर देखंतु एटा आपनकर कॉम्प्लेक्स हेता है एंड तासे तो एटा आपनकर सिंपल देन द SRAM डेंसिटी देखंतु एटा आपनकर लेस डेंस हेता है हाईली डेंस हेता है एटा आपनकर DRAM टी। स्टोरेज पर बिट होची कैन स्टोर मेनी बिट फॉर चिप्स सेकंड कोची कैन नॉट स्टोर मेनी बिट फॉर चिप्स एटा आपनकर दुई जन भितरे कैटेगरी सब कैटेगरी भितरे। तापर देखंतु रोम कथा देखंतु एटा आपनकर रोम रो फुल फॉर्म होची आपनकर रीड ओनली मेमोरी देखंतु रोम इज द लॉन्ग टर्म इंटरनल मेमोरी रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी देन रिटेन डाटा विदाउट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी देखंतु आपनकर करंट पळै जाय थाए हेतल मतलब डिस्कनेक्ट है पावर डिस्कनेक्ट है थाए तबे भी रोम टी एटा आपनकर डाटा को स्टोर करि थाए। रोम इज एन एसेंशियल चिप with permanent retained data or program. It is similar to the RAM that is accessed by the CPU. ROM comes with the
pre-written by the computer manufacturer to hold the instruction for the booting of the computer देखंतु ROM टी आपण मानकर with pre-written by the computer manufacturer एटा आपण मानकर देइथाय ताकि एटा होल्ड करथाय instruction for booting of the computer जोटा आपनकर करेक्ट रहइबो ROM विषय आपण मान देखिले read only memory विषय देखंतु तो आपनकर ROM टी जनरली तीन भाग रे विभक्त करा जायछि गोटा आपण मानकर PROM सेकंड आपनकर EPROM थर्ड कहिछि EEPROM तो देखो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जोटा कि PROM रो फुल फॉर्म होची प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दिस फॉर्म ऑफ ROM इज इनिशियली ब्लैंक द यूजर और द मैन्युफैक्चरर कैन राइट द डाटा प्रोग्राम on it by using special device however once the program or the data is written on the PROM chip it cannot be changed if there is an error in the written instructions or data in PROM the error cannot be erased EPROM chip become unusable देखंतु एटा आपण जो EPROM टी रहिछि एटा आपनकर बहुत इंपोर्टेंट रोल टी प्ले करे जेतोल आपण मानकर जो EPROM टी आपण माने आनी थिबे इनिशियली सेटा ब्लैंक रहि था एटा आपण मानकर जो मैन्युफैक्चरर बाय यूजर टी डाटा टी जो पुट करथिबो जदी से थरे भूली गेला ताले से जो आपनकर PROM टी एटा आपनकर डिस्ट्रॉय हेइ जेबा करिया पई पड़िबो जदी आपण मान थरे देले भूल डाटा तो एटा आपण यूजेबल होबो नाही एटा को आपनको खराब माने आपनकर खराब हे गेला बा एरर हे गेला हेति पई PROM टी एटा आपण बहुत इंपोर्टेंट जिंसटी जोटा कि आपण थरे जहा डाटा देबे से सेटा करेक्ट होबा दरकार तापर देखंतु EPROM कथा द मेन मेमोरी टाइप रिटेन इट्स कंटेंट only until it is exposed to intense ultraviolet light that clears its contents making it possible to reprogram the memory देखंतु एटा आपण तो डाटा सेते बळे जे क्लियर होन जेतळे अल्ट्रावायोलेट रे द्वारा आको क्लियर कर जाय नाही तापर देखंतु इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी तो एटा आपनकर EPROM जो डबल EPROM कैन बी बर्नड programmed and erased by fast electrical wave in a milliseconds. A single byte of the data or the entire content of the device can be erased. To write or erase this memory type, you need to device call a PROM burner. देखंतु एटा को आपण जो डाटा को इरेज करिया पई एटा आपण करू देखंतु फास्ट इलेक्ट्रिकल वेव जोटा कि मिलियन पर सेकंड रे एटा को आपण इरेज करिया पई पड़ी थाए सेति पई EPROM डबल EPROM टी एटा आपण मानकर जोटा कि ताट्रु EPROM टू अलगा देन तापर देखंतु सेकेंडरी मेमोरी कथा देखंतु सेकेंडरी मेमोरी टी द साइज ऑफ द मेन मेमोरी इज वेरी स्मॉल इफ large data need to be stored in it further the main memory is volatile in nature that is the contents are lost when the power supply is stopped देखंतु मेन मेमोरी कथा देखंतु एटा आपण मान जानले कि मेन मेमोरी जले आपण करंट सप्लाई टी स्टॉप कर देबे तो तार जो आपण डाटा टी स्टोर करथिबे सेटा सब कैंसिल हे जिवो तापर देखंतु जो आपण टू ओवरकम दिस another memory is used in a computer system called secondary memory or the auxiliary memory देखंतु secondary memory को auxiliary memory बोली कुआ जाय देखंतु जेतला आपण माने ए जो आपनकर volatile nature को जो आपनकर volatile आपनकर जो सिस्टम को ओवरकम करिया पई आपनको secondary memory यूज करा जाय this is larger as well as non volatile nature देखंतु एटा आपनकर लार्ज हिता ता सहित non volatile nature हिता जदि आपण माने करंट सप्लाई को बंद कले तो तथापि डाटा जहा हेतिबा आपण यूज करथिबे बा काम करथिबे सेटा स्टोर हे कर रहइबो This type of memory also known as external memory or non-volatile memory. It is slower than the main memory. एटा आपनकर main memory था slower हेता है. These are used for storing data information permanently. देखंतु एसो आपनकर permanently data टी को store करि था हेति पई एटा आपनकर slow हेता है. हेति पई एटा आपनकर non volatile nature रहिछि. सेकेंडरी मेमोरी रो एग्जांपल हम देखितले देखंतु कैरेक्टरिस्टिक को देखि दमा टिके देखंतु these are magnetic and optical memories. It is known as बैकअप मेमोरी देखंतु जहां भी आपण काम करथिबे सेटा बैकअप रे सेटा सेव हेई रहितबो इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऑलरेडी हम डिस्कशन करि सरछंती नॉन वोलेटाइल बोली डाटा इज परमानेंटली स्टोर इवन द पावर इज स्विच्ड ऑफ एटा नॉन वोलेटाइल सेति पई तार कैरेक्टरिस्टिक रहिछि इट इज यूज्ड फॉर स्टोर ऑफ द डाटा इन ए कंप्यूटर एटा आपनकर कंप्यूटर डाटा स्टोर करिया पई रहिछि ठीक अछि कंप्यूटर मे रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी देखंतु कंप्यूटर रन करिया पई जदि आपण मान चाहिबे सेकेंडरी मेमोरी न यूज करले कंप्यूटर मध्ये चलिबो किछि नै किंतु प्राइमरी मेमोरी द्वारा बा जो छाडी देबे तो आपनकर कंप्यूटर चलिबो नाही स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी ऑलरेडी हम जानले एटा आपनकर डाटा डी स्टोर करू सेति पई आपन टाइम दरकार सेति पई एटा आपनकर स्टोर मेमोरी बा आपनकर स्लोअर मेमोरी एग्जांपल देखंतु जो आपनकर सेकेंडरी मेमोरी आर मैग्नेटिक डिस्क फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क देखंतु मैग्नेटिक डिस्क कथा तो मैग्नेटिक डिस्क रही एटा आपनकर फ्लैट सर्कुलर platter with metallic coating that is rotated beneath read write heads. It is random access device read write head
can be moved to any location on the platter देखंतु एटा आपण मान देखिथिबे बेले बेले देखिथिबे मूवी रे गोटे थांती गीत बजला टाइप रे गोटे आपण मानकर रहिता एटा आपण मान देखिथिबे तो सेटा को आपण मानकर मैग्नेटिक डिस्क बोली कहा जाय एथिरे आपण मानकर डाटा डी सर्कुलर रोटेट होइता है नेक्स्ट तापर देखंतु फ्लॉपी डिस्क विषय रे these are small removable disks that are plastic coated with magnetic recording material. Floppy disks are typically 3.5 inch in size diameter and can hold 1.44 MB of data. This portable storage device is a readable media and can be reused a number of times. Floppy disks are commonly used to move files between different computers. The main disadvantage of floppy disks is that they can be damaged easily and therefore they are not very reliable. They are following a figure ଟି ଦେଇଛି ଏଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡିମେରିଟ ତାର ଡିମେରିଟ होची ସେମାନେ ଏଟି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ डैमेज ହେଇଥାଏ ସେଥି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ रिलायबल नुहे तापर देखो नेक्स्ट आपनकर हार्ड डिस्क अनदर फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी बा आपनकर सेकेंडरी मेमोरी इज हार्ड डिस्क ए हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिजिड मेटल प्लेट्स coated with a metal oxides material that allow data to be magnetically recorded on the surface of the platters. Storage capacity of the hard disk for the personal computer ranges from 10 GB to 120 GB, 1 billion byte that are called gigabyte. এটা ଆପଣମାନଙ୍କର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଗିଥାଏ ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋରେଜ କାପାସିଟି 10 GB ରୁ ନେଇକରି 120 GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ତାପରେ ऑप्टिकल डिस्क देखंतु ऑप्टिकल मार्क्स स्टोरेज डिवाइस स्टोर बीट वैल्यू as variation on light reflection. They have higher area density and longer data life than magnetic storage. They are also standardized with and relatively inexpensive. They are used read only storage with lower preference requirements, application with high capacity requirements and where portable in the standardized format is needed. देखंतु ऑप्टिकल डिवाइस टी एटा आपनकर ऑप्टिकल मार्क स्टोरेज डिवाइस स्टोर बीट वैल्यू आज वेरिएशन इन लाइट रिफ्लेक्शन एटा लाइट रिफ्लेक्शन हिसाब रे एटी स्टोर डाटा टी स्टोर करिता है ऑप्टिकल डिवाइस रो कुछ एग्जांपल देखंतु सीडी रोम लाइक रीड ओनली सीडीआर रेकॉर्डर टू सीडी CDRW can write erase CD data because it is rewritable. DVD जोटा कि डिजिटल वीडियो डिस्क आपण देखिथिबे सब आपण सीडी टाइप रे आपण छोट बळ देखिथिबे एथरे आपण गीत बजि थाए ए सब जिंस टी आपण मानकर जोटा कि ऑप्टिकल डिस्क रे जाउछि तापर देखंतु फ्लैश मेमोरी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी इन जोटा कि कंज्यूमर डिवाइस टुडे इट इज स्टोर आवर फोटो आवर वीडियो आवर म्यूजिक आवर डॉक्यूमेंट एंड सो मच मोर देन इन फैक्ट Flash memory has most replaced the magnetic hardware disk जोटा कि HD disk को एटा रिप्लेस करछि they used to be common in computer देखंतु आपण मान देखिते पेन ड्राइव को एसो आपनकर एग्जांपल होछि फ्लैश मेमोरी रो तापर देखंतु मेमोरी मैग्नेटिक जो टेबल टी देखंतु एटा आपनकर यूनिट देखंतु बिट बाइट केबी एमबी जीबी टीबी देन तापर पेटाबाइट एक्साबाइट जेटाबाइट योटाबाइट बोंटाबाइट एसो रहिछि एब्रिएशन रही बी हूँ कॉमन बी कैपिटल बी केबी जीबी ये सब आपन तार सब सिंबल रही एंड सहित अप्रोक्सीमेट केते साइज रही एटा आपन देखंतु केबीटी 1000 बाइट टी एंड सहित एमबीटी 1 मिलियन बाइट सब रही सब आपन भल भाବରେ थरे देखि नेबे एक्चुअली रे एटा आपनकर जो आपनकर गोटे केबी 1024 आपनकर बाइट टी एंड एमबीटी 1024 केबी जीबीटी 1024 एमबी ए सब आपन थर थरे भल भाବରେ देखि नेबे सो एटा थला आपन मानकर थियोरी क्लास टी जदि आपनकर मेमोरी विषय आ किसी थियोरी रे क्वेरी रहि जाउ थाए त मते कमेंट जणे परिबे तापरे नेक्स्ट पार्ट रे माने या सब क्वेश्चन को देखि नबा तो जदि आपनकर वीडियो टी पसंद आसुची तो गोटे लाइक करंतु चैनल जो सब्सक्राइब करे नांती चैनल को सब्सक्राइब करंतु एबोली लेटेस्ट अपडेट पाया पे हम चैनल सहित जोड़ी रहंतु नेक्स्ट वीडियो रे आपन सहित देखा हेबो सेति पजन टेक केयर।